Bharat. Welcome in idiom series. Now let's go with another 10 idioms. Let's start with the first one, ABC. ABC means to have primary knowledge. अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि उसके पास इसका थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, प्राइमरी नॉलेज भी नहीं है, you can use this thing. He does not know the ABC of music. He does not know the ABC of maths. He does not know the ABC of science. Means उसको साइंस का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है. To know the ABC of means to have the primary knowledge. ABC means primary knowledge. Second one, a bite at the cherry means an opportunity. A bite at the cherry. He expected to have a bite at the cherry. Means he expected to have an opportunity. He needs, actually he wants to grow but he needs an opportunity. Means he needs a bite at the cherry. A bite at the cherry, an opportunity. Third one, a fly in the ointment means a person or a thing that spoils an enjoyment or an occasion. आपने देखो कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती, किसी का अच्छा वो अच्छा नहीं लगता, तो they spoil their enjoyment. At that time you can say he is a fly in the ointment. That so and so person is a fly in the ointment means वो हर एक occasion को, हर एक enjoyment को spoil ही कर देता है. At that time you can say that the person was a fly in the ointment. A feather in one's cap means an award, credit. हम नहीं बोलते अगर ये लोग ये मैच जीत जाएंगे ना तो ये इनके लिए एक और खुशी की बात होगी. It would be the credit for them. If they win this match, they will add another feather in their cap. If he wins the match, he will add a feather in his cap. मतलब एक और खिताब उसके हाथों में आ जाएगा. A feather in one's cap means an award, credit. A fly on the wall means a person who watches others secretly. छुप-छुप के देखने वाला. आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, वो लोग बिल्कुल बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन वो ये देखना भूल गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई उनको छुप-छुप के सुन रहा है. They were busy talking. They were busy talking and did not notice a fly on the wall. They were busy talking and did not notice a fly on the wall. उन्होंने किसी को नोटिस नहीं किया, कोई उनको छुप-छुप के सुन रहा था, देख रहा था. तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं a fly on the wall. फिर है rat race, an aggressive competition for success. इसका अगर एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ये तो हमारे मन की बात इन्होंने कह दी. Nowadays children are put on a rat race. Nowadays children are put on a rat race in schools, colleges. कि भाई हाँ भागो बस किसी को पीछे कर दो, आप आगे निकल जाओ, यही करते रहो. Aggressive competition for success, that is nothing but a rat race. A prime mover, one who has the most effective influence on something done. कुछ हुआ है ना, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्फ्लुएंस उनका ही सबसे ज्यादा है, तो ऐसे इंसान को बोलोगे आप अ प्राइम मूवर. सरदार वल्लभ भाई पटेल was the prime mover in Indian freedom movement. Sardar Vallabhbhai Patel, none other than but Sardar Vallabhbhai Patel was a prime mover in Indian freedom struggle. वही सबसे, इनका ही इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहा जो हमने आज हमें इंडिपेंडेंस मिला उसमें. A leap in the dark. Next है a leap in the dark means a step taken without knowing results. हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन बस कूदो. हम कूद जाते हैं बिना सोचे समझे. That means you are taking a leap in the dark. मान लो कि आप अब्रॉड जाना चाहते हो, वहां जाके क्या करोगे, कोई पूछेगा what would you do after going over there, आप बोलोगे I don't know. Means you are taking a leap in the dark. You are going abroad, you do not have any job in your hand, means you are taking a leap in the dark. Next is a lone wolf. A lone wolf, a person who wants to live alone. अपनी तरह मनमौजी, अपना अकेले रहने की जिसको आदत है, अकेले रहना जो पसंद करता है, ऐसा इंसान one who prefers to live alone, अकेले रहना पसंद है जिसको. Mr. Shah is a lone wolf. उनको अकेले रहना पसंद है, उनको किसी की कंपनी पसंद नहीं है, having no company. He prefers nobody's company. That means he is a lone wolf.
And last but not the least for today, a race against the clock. An attempt to do something too fast. A race against the clock मतलब an attempt to do something too fast. Constructing a bridge within a month is nothing but a race against the clock. एक महीने में ब्रिज कंस्ट्रक्ट करोगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट ये करना चाहते हो आप, मीन्स यू आर डूइंग नथिंग बट अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक. मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग टू फास्ट दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो इसको बोलते हैं रेस अगेंस्ट द क्लॉक. Practice all these 10 idioms. Frame your own sentences. Write the sentences in the comment box. Use them in your write-up, in your speech, and enrich your English. Jai Hind, Jai Bharat.